शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाए, ये शिष्य का मतलब नहीं। गुरु जी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था, मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब 200 शिष्य मेरे साथ में थे, उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, इस खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की बत्तियां लगाई थी। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, स्वामी गुरु आरती होती, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई के साथ में थी, जैसे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक लिया। अब मैं मुंह नीचे को ठेठ और लाया, मैं अब पीछे तो घटना अब कितनी जाएगी थे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से दार नहीं, अब कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं कहूंगा तो मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे कर दूं, और नदी का जय गुरुदेव दयानिधि। अब मैं दयानिधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं आज से उसकी आरती को ये क्या? अरे मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं करती ऐसा, आप कब गवाते? एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये बोला तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरुजी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा मौका, बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया। और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे, वो दयानिधि अधिकारी, वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने वाइफ बेचारे घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तब ताके, मेरे हाथ से टल्ला मारे, तू टल्ला मार, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दीन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी बात। तो शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं। आप मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है, वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते। तो ये भी चिंतन नहीं होता कि आड़मास का आदमी है, देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ। तब वो जब चरण छूता है, तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती है, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अगर गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि घर में क्यों छटपटाहट है, तकलीफ तो है नहीं मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। अब क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम मेरे शिष्य बन सकोगे, जब तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। Disciple in Sanskrit is Shishya, and it means to come closer. The disciple always comes closer to the Guru. This does not mean that he should go and embrace the Guru. This is not what I mean by coming closer. About 4 to 5 years back, when I was returning from Gangotri, there was this disciple who made very good arrangements for the 200 disciples who were with me. He arranged for their stay and their food. I promised to visit his house in Hyderabad. When I reached Hyderabad, he had hired a musical band and was feeling very happy. He had arranged for us to stay in a guest house, and on the gate of the place he stood with a plate containing a dozen lighted earthen lamps for Aarti.
When I reached the gate, he started the arati. I stood there with my wife and some other disciples as he performed the ceremony. While performing the arati, he came closer and closer, and soon the flames from the dozen lamps were hardly an inch or two from my face. I turned my face, and he came even closer. I strained my neck backwards to its limits. Still the intense heat reached me. I hesitated to say anything to him, as all his relatives, friends, stood nearby. I thought, if I say something, he will feel hurt, and if I don't, my brows and hair will burn. I moved a step backward, and he moved still closer. O Gurudev, thou art an ocean of kindness. He sang as he performed the arati, and I said to myself that soon this ocean of kindness shall end up on a bed in some hospital. I extended my hand to stop the arati, but he said, Guruji, it is rarely that we get a chance. You hardly come to visit us. I said to myself, you have got a chance and I am stuck up. This does not mean that you send me straight to a hospital. To him I said, perform arati from a distance. He said, Guruji, such occasions do not present themselves again and again. Today we have at last got a chance. And speaking these words, he came still closer to me. The intense heat almost scorched my face, and it seemed as if ages had passed when the arati finally concluded. Till then, my face had become red like a hot iron. My poor wife became overtly anxious at my sorry state. She kept looking at me and with inquiring eyes, as if saying, what is all this? I said to her, what can I do? Today I am caught up amongst my disciples. I have always been kind to them. Now it is up to them whether they shower me with their kindness or not. Shishya does not mean that you come and ram into me and then say that I had asked you to come closer. Believe me, for coming closer, it's not necessary for you to break my bones. Coming close means becoming one with my soul, forming a bond with my soul and with my heart. When the disciple reaches the third stage, he comes closer to the Guru. Coming closer means that even his thoughts are not his own. In this state, there remains no questions in his mind. Then he does not even think whether the Guru is an ordinary man of flesh and blood or he is a god. He only thinks that he is his Guru and his Guru is everything for him. When his thinking transforms in this manner and when he touches the feet of the Guru, he realizes divinity in those holy feet. When this happens, his eyes fill up with tears of joy, and thus the disciple learns how to devote himself fully. When he becomes fully devoted, he obtains everything from the Guru. In this relation of Guru and disciple, there is no give and take. Establishing yourself in the soul of the Guru means getting closer to him so that your soul and his soul fuse to become one, and even your physical form becomes one with that of the Guru. All the time, only one thought should remain in your mind, and that is how to make the Guru happy, because then the body of the Guru becomes your own, and if a thorn pricks the feet of your Guru, you feel the pain, you feel restless. You shall not be in distress, but shall still experience restlessness. Then you shall know that something is wrong.
This shall happen only when your soul fuses with mine and becomes one with it. They shall become one when you become a disciple, when you devote yourself. जब लैला मजनू अपने आप में, वो लैला को तुमने शायद पढ़ा नहीं होगा, लैला अपने आप में कानी थी और कलूटी थी, काली थी, एक आंख उसकी भैंगी थी और एक ठिगनी सी लड़की थी, बिल्कुल बेकार सी लड़की थी। जब मजनू उसके सामने कपड़ा फाड़ने लग गया और खून शरीर का निकालने लग गया और 24 घंटे वहीं खड़ा रहने का दरोगा के सामने, तो राजा ने उसको पकड़ के राज दरबार में बुलाया। उसका मजनू, हम बहुत बदनाम हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, पूरा हमारा नगरी पूरी बदनाम हो रही है, आज ज्यादा ट्रैफिक रुक रहा है, ये सामने 20-25 सुंदरियां खड़ी हैं जो मेरे राज दरबार, इसमें से कोई चुन लो और लैला को भूल जाओ। उसने एक को देखा, देखने के बाद कहा इसमें लैला तो कोई है नहीं, लैला नहीं है, तुमने इनको लेके क्या करो? फिर तुम्हारे मन में कालापन और महंगापन और छोटापन और बड़ापन और धोती कुर्ता पहना हुआ, सफेद कपड़े और महंगे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने, वो कोई अर्थ नहीं रखेगा। फिर तुम्हारे सामने गुरु का बिंब होगा, एक आत्म चेतनता होगी, उनको अपने आप में, जब तुम आंख बंद करोगे तभी गुरु दिखाई देंगे, आंख बंद नहीं करो तभी गुरु दिखाई देंगे। जब ऐसी स्टेज आएगी तुम्हारे जीवन में, तुम स्वयं अपने आप में गुरुत्व प्राप्त करोगे। जब गुरुत्व प्राप्त कर लोगे तो तुम स्वयं ब्रह्मा कहलाओगे, तुम स्वयं विष्णु कहलाओगे, तुम स्वयं रुद्र कहलाओगे, तुम जीवन की एक ऊंचे उठने की क्रिया होगी, अपने आप कुंडली जागृत हो जाएगी। कितनी साधनाएं करोगे, कहां तक साधनाएं करोगे? समय तुम्हारे पास बहुत कम है, ये सीधा स्टेज है, सीधा तरीका है, मगर उसके लिए तुम्हारे आंख में उतनी तड़फ बेचैनी होनी चाहिए, उतना आंसू झिलमिलाने चाहिए, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए, अपना सब कुछ लुटा करके भी बहुत कुछ प्राप्त करने की क्रिया होनी चाहिए, और ऐसा तुम में हो। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। Layla and Majnu were great lovers. Layla was very dark complexioned and could see with only one eye. Her second eye was squinted. She was also very short and was not at all beautiful. But Majnu fell in love with her, and he became so mad in her love that he tore his own clothes, started ripping apart his flesh with nails, and remained standing near her house, waiting to have a glimpse of her through a window. The king, the father of Layla, had Majnu brought before him. He said, "Majnu, we have had to face a lot of social disgrace, all because of you. Before you there are the 25 most beautiful women of this kingdom. Choose any one of them and forget Layla." Majnu looked carefully at each of the women and then said, "Layla is not here among them. When she is not there, what shall I do with them? This is the stage you have to reach, and when you do so, it won't matter if the Guru is wearing white clothes or achar robes. A divine image of the Guru shall always remain before your eyes, and you shall attain divine bliss. Then you shall see the image of the Guru even when your eyes are closed or open. On reaching this stage, you shall yourself attain the state of a Guru, and you shall then be called Brahma, Rudra. This process shall elevate your spiritual life to empyrean heights, and your Kundalini shall get activated all by itself. How many sadhanas can you do? You have so little time and so much to achieve. This is a straight way, but to follow it, there should be a deep longing and tears of joy in your eyes. You should be fully devoted, and there should be a determination to achieve everything by sacrificing all you possess. I hope you achieve all this. I bless you from the core of my heart." बोले पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय। नारायणोत्वं निखिलेश्वरोत्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा
त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परमपूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ